All right, we are live. What's up, guys? Today we do a little more research about this. What did I tell you? Did I not tell you this? This will happen. I'm not. Abhi to I don't even know. I'm not even gonna say for or against anything like that. But did I not tell you? All right, let's see what's going on. ASI under Ministry of Culture, Government of India, is the premier organization of the archaeological research for the archaeological research and protection of the cultural heritage of the nation. All right. What are people saying? What are people saying? हमारी मस्जिद है, हमारा घर वो बयान मोदी जी ने कहा है उसको हम नहीं मान रहे। सीधी बात, हमारी मस्जिद है, हमारा घर वो मस्जिद रहेगा, हमेशा मस्जिद रहेगा। हम उसको कोई दूसरा चीज़ नहीं दे सकते। कोर्ट जो फैसला करेगा उसको हम मानेंगे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि उसमें चिन्ह हैं जो हिंदू धर्म से जो ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे चिन्ह हैं, संकेत हैं, तो इस बात को क्यों नहीं मुस्लिम समाज मान रहा है और इतिहास में जो उनसे गलतियां हुई उसको सुधारने का क्यों नहीं पहल कर रहा है? अरे भाई, सवाल इस बात का है उसको क्यों हम माने? जब हमारा है धर्म का चीज़, सब चीज़ पहले क्या था क्या नहीं था, उसको आज मस्जिद है ना, उसमें हम मस्जिद मानते हैं। हम क्या जाने क्या है क्या नहीं है, उसके कहने से क्या वो। And it's super weird. You know, journalists चले जाते हैं ना, normal लोग. Normal people are not qualified to have discussions like these. I am not qualified to have discussions like these. I'm just trying to do my research. लेकिन जब journalist normal लोगों के पास चले जाते हैं, हमको क्या लगता है इस बारे में, क्या होगा क्या नहीं होगा? He doesn't know. He's not an expert. Talk to the experts. कहेंगे तो हम मान लेंगे, हम नहीं मानने वाले हैं। हमारा अल्लाह घर है। दी ओनली रीज़न मैं इसके बारे में इतना बोल रहा हूँ बिकॉज ऐसे नॉर्मल लोगों को जर्नलिस्ट बहुत इजीली कॉन्वर्जेशनल ट्रिक्स में फंसा सकते हैं एंड देन मीम्स बनते हैं, देन क्या क्या होता है उसके बाद, मीम्स बनते हैं एंड येस कॉम्युनल हेट थोड़ा सा बढ़ता ही है विदाउट अ डाउट बिकॉज इफ़ यू गो एंड टॉक टू लाइक व्हाट 100 पीपल, कोई ना कोई तो तुम्हें मिल ही जाएगा ना, विल बी एक्सट्रीम एंड स्टूपिड एज वेल। तो मस्जिद है, हम उसको मस्जिद मानते हैं। कोर्ट जो फैसला करेगा उसको मानेंगे। बयान मोदी जी ने आज के समय में मामला होता तो माना जाता कि जमीन की तंगी है हर जगह, क्या महंगी भी है। जिस वक्त औरंगजेब था उस वक्त तो जमीन ही जमीन थी, क्या हजारों हजार एकड़ सब खाली थी, क्या नहीं? आबादी कम थी, जमीन तो इससे ज्यादा थी। फर्स्ट कमेंट, क्या हाल है मुकुल? आर यू अवेयर ऑफ दिस मुकुल? यू आर नॉट इनटू दिस एट ऑल, है ना, जहां तक मुझे पता है। उस वक्त भारत के पास ये सटा के काहे को बनाई मस्जिद, मैं नहीं समझ पा रहा। मथुरा में भी अरे अलहदा नहीं बना सकते थे, और बनारस में यहां चढ़ा के मस्जिद बनाने से बेहतर ये सुझाव क्यों नहीं औरंगजेब को किसी ने दिया कि मुस्लिम आबादी जहां है वहां बना लो, जिले लाई वहां कम से कम चैन से आदमी नमाज तब भी पड़ेगा। नहीं, इस इलाके में तो मुस्लिम आबादी है नहीं। That's extremely stupid. I think everyone knows why they did what they did, right? Oh, क्या हाल है? अरे मेडल भी लेके आए डॉक्टर साहब। But that's extremely stupid the case is making because everyone understands कि ये सारी चीज़ें, लोग कल्चर बदलना क्यों चाहते हैं? लोग कल्चर इसलिए बदलना चाहते हैं बिकॉज जो उनका कल्चर है, जिस जगह पे उन्होंने इन्वेट करा है, वो हमेशा क्लियर रहे। So if you can bring that change generationally, you can make that change forever. ऐसा बहुत सारी civilizations में हुआ है, अलग अलग invaders ने करा है। So either these guys are completely disagreeing with that point, तो इसके लिए maybe he's saying that, otherwise it's not even a question. ये बात आज तक लॉजिक समझ में नहीं आया मौलाना साहब मेरी। ना प्रॉपर्टी डीलर थे, ना चकबंदी थी, ना हदबंदी थी, ना जमीन का रेट हाई था, चढ़ा काहे को बनाई? जब ट्रेन खाली होती है तो सब लोग एक एक सीट पे अकेले बैठते हैं पैर फैला के, नहीं एक ही चैट स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रहा। एक सेकंड यार, लेट मी ट्राई टू फिक्स इट। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। हॉर्स का मतलब आज भी घोड़ा है बंदरा। Alright, let me see what I can do about the chat first. This is important. ऐसे करते हैं ना, yes, alright, रिस्टोर कर देता हूँ यहाँ पर। Let me see if I can fix it. Are we getting it now? नहीं, we're still not getting it. क्यों भाई? चैट कभी सही हो ही नहीं सकती क्या? Let me try something else.
समझ नहीं आया, मैं समझ नहीं पाया मैं हॉर्स का मतलब, मैं भी नहीं समझ पाया भाई. I'll just try to fix the chat. Okay, guys. There you go. All right. End कर दूँ stream? How's that, guys? ठीक है. There we go. एक बिंद्रा के लिए हॉर्स भी बड़े बेशरम हो तुम लोग. आसान है भाई. भाई चैट ठीक करना आसान नहीं है, बाकी सब फिर भी हो शायद. ये गोद में चाट क्यों बैठो? ओह आई गॉट इट नाउ. मुकुल नॉटी हो रहा है. केस में लगे हुए हैं. मैं काशी मथुरा अयोध्या के बाद काशी में लग गया और मथुरा में लगा हूँ. आपको लग रहा है और कि वहाँ साथ पे साथ कुछ प्रोग्रेस 16 मंदिरों का मामला मेरे टेबल पर है, तो बहुत जल्दी आपके सामने आएगा. तो सब पे आप ये करने वाले सब पर करने वाले हैं. और इससे जो समाज में इम्पैक्ट होगा वो समाज के इम्पैक्ट जैसे आपने जब हमारा तोड़ा था तो क्या इम्पैक्ट हुआ था? हमने सदियों से जो आज लोग हैं उन्होंने थोड़ी तोड़ा. हैं? जो आज लोग हैं उन्होंने तो हमने उनको भी कुछ कहा भी नहीं. तो आप उनका सहयोग तो करा पाटिए. तो ये आप उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? अगर किसी दरिंदे ने कोई काम गलत किया तो आप उसका उपयोग भी नहीं कर सकते. तो आप हटिए. हम कहा आप समझ तो आपने क्या टाइमलाइन रखी है? कब तक आपको लग रहा है कि काशी में भी मंदिर बन जाए? देखिए टाइमलाइन तो लोग हमसे पहले पूछते थे कि डेट बताइए. सब डेट नहीं बताई जाती, सब सामने आ जाती है. तो कब तक पर आएगी सामने? रफली बता दे रहा हूँ, 29 के पहले लिख लीजिए मेरी बात को. आज हम आप मिले अयोध्या जाते समय रात दिन मोदी जी के हाथों दोनों मंदिरों का शिलान्यास भी होगा, उद्घाटन भी होगा. काशी में भी मथुरा में मथुरा भी? में भी. ये कैसे कह रहे हैं आप? ये कैसे कह रहे हैं आप? पहले उससे पूछ रहा, फिर कह रहे हैं ये कैसे कह रहे हैं आप? भाई हिंदी आई मीन थिंक यू मीन हिंदू मुस्लिम दोनों ही लड़ लड़ के गलीज फना दिखा रहे हैं. काम के मुद्दे गए यार, बट मेरे ख्याल से ऐसे नहीं कह सकते कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं. मतलब दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स दे आर. अच्छा सो दिस इज़ द फोटो ना जो बहुत वो हो रही है. वी रियली डू नॉट नीड एन ASI. ओके हियर इज़ माई क्वेश्चन. जो मैं पूरी वो क्या कहते हैं राम मंदिर वाली जो स्ट्रीम करी थी, जो मैंने रिसर्च करी थी, उसमें मेरा एक पॉइंट था विच आई फाइंड हमेशा, आई थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग दैट. I don't generally like the philosophy where you try to right history's wrongs, because the question is where do you stop. So for example, right, for example ये time is linear, right? तो time तेरी भैंस की आँख, how do you do this? Okay ऐसे करते हैं ना. हाँ, so this is time, right? time linear चलता है. अलग अलग points in time होते हैं सारे. टेढ़े टेढ़े. right, all right. Fuck off. ये क्या? अरे भाई मैं सीधा नहीं बना सकता क्या? सो देर आर डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम. अलग अलग पॉइंट्स इन टाइम में दुनिया बहुत अलग अलग होती है. वी अंडरस्टैंड दैट. अलग अलग दुनिया के लॉज अलग अलग होते हैं. तो जो लॉज इस टाइम पे थे, उस टाइम पे जो लीगल चीज़ें हुई वो आज के टाइम पे लीगल नहीं है एग्जैक्टली. मे बी यू कैन मेक द क्लेम कि दोनों टाइम पे मॉरलिटी जो है वो सेम थी, बट लीगलिटी इज़ नॉट नेसेसरीली द सेम. भाई जैसे को रोस्ट करो, घमंडी है साला. ये कौन है? जैसे मैं क्यों रोस्ट करूँ? जैसा ही, हु इज़ दैट? एनीवेज, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें होती हैं. तो फॉर एग्जांपल जब बाबरी मस्जिद वाले टाइम पे ये सारी चीज़ें हुई, जब वो मस्जिद बना, लेट्स से वो मस्जिद जैसे मंदिर के ऊपर बनाया, तो वी वर लिविंग इन अ डिफरेंट टाइम जहाँ की जो लॉज थे वो अलग थे लॉज, राइट. एंड जब 92 वाला सीन हुआ तो उस टाइम पे लॉज अलग थे. तो दिस एक्ट जो 92 वाला था बिकम्स इलीगल, राइट, एंड दिस एक्ट बिकम्स लीगल. डज दैट मेक सेंस टू यू? सो इसलिए राइटिंग द हिस्ट्री इज रॉन्ग कुछ हद तक सही है इफ़ यू कैन डू दैट, यू नो. नहीं, आई डोंट थिंक. आई थिंक दिस थिंग ऑलवेज गोज टू द एक्सट्रीम. क्योंकि चलो ये तो लाइक 500 साल पहले हो गया, राइट. इससे पहले हाउ फार बैक डू यू गो?
And I asked someone stream करते हुए, you know, there were a lot of people also saying कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. Because मेरा point ये था, okay, right now we are here, let's say we are here at 2024. ठीक है, we are here. तो ठीक है, we are doing this. ठीक है, वो we just made the Ram Mandir, which is great, right? The point is, where does it stop? क्योंकि जो history है वो तो हमारे पास बहुत ही लंबी है ना. Where exactly does it stop? Our attempt to right the wrongs of history. Someone said on the stream कि it will stop on 22nd date को. And look what we have now. So it hasn't stopped on 22nd. So the point is, how far back do we go? So-called the one of the most fucking one of the most fucking intellectual, arrogant guy of present India. कौन है? जैसाई. अच्छा, जैसाई दीप. Oh, that guy who's into debate a lot, है ना? He's smart, I think. जैसाई दीपक नाम है पूरा. All right. Yeah, this guy, right? हाँ, I know. So the thing is, अभी ना इंडिया का एक डिबेट वाला वो चल रहा है बेसिकली. अभी इंडिया एक ऐसे फेज़ में है, मार्क माई वर्ड्स ऑन दिस, अभी इंडिया डिबेट वाले फेज़ में, राइट? तो लोगों को बड़े मज़ा आ रहे हैं वो ओन्ड वीडियोस देखने में. ही ओन्ड हिम, ही डिस्ट्रॉयड हर, शी डिड दैट, हु डिड दैट, फक ऑफ एवरीवन, राइट? डिस्ट्रॉयज एवरीवन इन 6 minutes. और ये सब चीज़ें चल रही हैं अभी इंडिया में. ये बहुत टाइम तक तो नहीं, नॉट बहुत टाइम तक, कुछ टाइम बाद बेसिकली क्या होगा, द सीन विल चेंज अ लिटिल बिट. व्हाट्सअप भविष्य, क्या हाल है? थैंक्स फॉर जॉइनिंग. The scene will change. When I die, I want Sandeep to lower me into my grave so he can let me down one last time. तो अभी इंडिया में थोड़ा चल रही है बहुत चीज़. Oh, look how he destroyed her, how she destroyed him. Destroy culture अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है इंडिया में. धीरे धीरे क्या होगा, ये destroy culture चला जाएगा डिबेट के साथ साथ. And then I think people will start, I hope so, I really hope so. Then people will start valuing conversations rather than roasted, destroyed and ये सारी चीज़ों से. भाई इसकी वीडियो चला के पॉइंट्स निकालो as you do in other videos. यार मैंने इसकी ना ये वीडियो देखी है जी, as you can see आधी, ठीक है. बाकी ही इज़ रियली गुड. नहीं, मैंने ये भी देखी है, बट अच्छा हाँ, ये मैं उस टाइम पे जब UCC की बात हो रही थी. आई थिंक ही इज़ वेरी स्मार्ट. बट मैं क्या देखूँ, फियर ऑफ हेल इन मुस्लिम्स. इससे पहले वी कैन गेट इनटू दिस. मेरा फ़नी है वैसे, फ़नी तो है भाई, मैं कहता रहा हूँ फ़नी तो है, मैं शुरू से कह रहा हूँ. जैसा ऑन वाई BJP इज़ वीक, CAA, NRC एंड लेफ्टिस्ट. ओके, ये लोग आई थिंक वही कर रहे हैं, मुकुल चतुर्वेदी देखना है. आई नो दिस गाय, आई नो दिस गाय, आई डोंट नो द थर्ड गाय. आई थिंक दीज आर मॉडर्न रैशनलिस्ट्स. Mandir or hospital? Anyways, so do you guys know about this Gyanvapi mosque wala scene? So basically, everyone is saying this is what is trending, कि यहाँ पर it's been proven कि यहाँ भी मंदिर था. Hello Nilesh bhai, what's up? Raj speaks. क्या हाल है? Thanks for joining, man. What are people saying? यहाँ करके मंदिर नहीं तोड़ा था. हाँ? नहीं, वो दुनिया देखा, हमने देखा तो नहीं. अरे मस्जिद कैसे नहीं है? हमने इतिहास देखा है. हर एक आदमी अपने राज में जब उसकी पावर मजबूत होती है तो तोड़ा आता है. आपको लगता है आप मजबूत होंगे तो आप क्या करेंगे? हम भी तो मुसलमान हो करके मस्जिद बनवाऊंगा. कहाँ? अपने घर. और जहाँ बाबरी थी, जहाँ ढांचा था, जहाँ मंदिर बन गया. हमसे उसे क्या मतलब? You see, it destroyed culture. Like whoever made this video, like what are you getting at? What are you really trying to do? Are you trying to make the claim that, oh look, we are dominating these people? Is that what you're trying to point out? That's really weird for me. Like, what's the point of this reel? Anyway, so this is what's going on now. इसमें एक चीज़ है which I want to see, क्या कहते हैं तो उसको, हाँ, places of worship act.
What is the Places of Worship Act about it? It was enacted to freeze the status of religious places of worship as they existed on August 15, 1947, and prohibits the conversation of any place of worship to ensure maintenance of their religious character. So, what about this? अच्छा, by the way, ये जो act था Place of Worship Act, it was excluding the, Babri Masjid, Ram Mandir, Janmasthan, whatever you want to call it, right? It was excluding that place, modern day Ram Mandir, and perhaps the ancient Ram Mandir as well, right? तो इस एक्ट का पॉइंट ये था, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसका पॉइंट ये है कि अब ये बातें नहीं करेंगे कि यहाँ पर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. आई थिंक दैट्स व्हाट इट मीन्स, राइट? एन एक्ट टू प्रोहिबिट द कॉन्वर्सेशंस ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप टू एंड टू प्रोवाइड द मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस एंड वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन द 15th day of August 1947. Section 4 ऐसा अलग से क्यों लगा? Section 2 alright. I don't know how to read these official papers. I got no idea. What do you guys think? By the way, Vivek, we can continue our discussion. Karwala Shweta also uploaded a video. I'm interested in watching that as well. मेरे भाई क्या हाल चाल? Another reel. Shweta को एक और reel मिल गई. So we can continue Karwala discussion as well. Though I cannot find many things about this right now. इशू है ना, मैंने स्ट्रीम का टाइटल रख दिया अब. Why? भाई भागेश्वर बाबा कैसे बता देता है सामने वाले बंदे के बारे में? यार मैंने भागेश्वर का इतना देखा नहीं है, बट आई थिंक ही यूजेज अ बेसिक प्रिंसिपल कॉल्ड वन अहेड प्रिंसिपल, मेरे ख्याल से. आई हैवंट सीन मच ऑफ हिम. लेट मी सी इफ आई कैन प्रॉब्ली शो यू हाउ. वन अहेड प्रिंसिपल तो मैं बता सकता हूँ, बाकी आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू, अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन डू. 2 मिनट दे मुझे. Actually, I can get to it right now. Hold on. Kaboom! Oh my god. Blurry screen. I need this. Can you see it now? No, still you cannot see it much. It's important for you guys to be able to see the table thoda sa. Can you see it now? Not even now. Hold on. Lakshay, क्या हाल है भाई? बहुत टाइम बाद, not long time now seeing you, right? All right, now you can see it, right? Fuck off, Marshall. Exactly, that's what I said. Fuck off. So I have a deck of cards, right? एक बहुत basic principle बता रहा हूँ, which is called the one-head principle. I was thinking too much about the fake accusation stuff. I'm not in the mental capacity to debate it right now. All right, man. So basically, you take a deck of cards, right? This is one of the most basic tricks you can do. So you go like, oh look, all the cards are different, right? No, 2 cards are the same. Every card is completely different. You'll show everyone basically, and you even offer them to shuffle the cards, right? Now what you do is, इस कार्ड को मान लो तुमने रख दिया ऐसे कार्ड्स को ऐसे, राइट? एंड यू गो, तुमने कार्ड्स को शफल करा है, राइट? ऑल द कार्ड्स आर डिफरेंट. व्हाट्स अप, केजी इज हियर. अरे गौरव, इज दैट यू? मिस द मैजिक. वी आर टॉकिंग अबाउट भागेश्वर बाबा. So you tell them, and now they shuffle the cards. You tell them कि basically, all right, you cut it anywhere you want, and you do your mental magic. You're like, oh, this is the 2 of clubs, and this should be the ace of diamonds. So what this is called is basically called the one-head principle, right? And by the way, obviously, this will be the ace of diamonds. This will be the 2 of clubs. The point is simple. ऐसे मैंने एक बहुत पहले वीडियो देखी थी भागेश्वर बाबा की. आई थिंक ही इज़ द गाय, एंड he was doing that उस वीडियो में एटलीस्ट. सो बेसिकली व्हाट यू डू इज, आफ्टर द कार्ड्स हैव बीन शफल्ड, जब तुम दिखा रहे होते हो कि देखो सारे कार्ड अलग अलग हैं, ये है वो, यू टेक अ लुक एट द लास्ट कार्ड, इन दिस केस विच इज़ द 5 of clubs, राइट? सो वी हैव द 5 of clubs here, एंड उसके बाद उन्होंने शफल करा. यू जस्ट टेक अ लुक एट द लास्ट कार्ड, दैट्स व्हाट यू नीड, 5 of clubs. उसके बाद यू
they cut the cut wherever they want. You know, ये है 5 of clubs, right? 5 किसका कहते हैं, चिड़ी का 5, right? तुम्हें ये पता है, तुम ये तो कहोगे नहीं ये 5 of clubs है. What you'll do is कि you'll say ये है 5 of clubs, ठीक है? And then you take a look at it, which now it's 4 of diamonds. You'll say ये है 4 of diamonds, and easily you can basically do like you know. You don't even have to switch them. You just show them. See, I was right about it. You just do a little bit of time misdirection. I think I've seen Bhageshwar Baba do that. So basically, he might have an extremely vague answer written which will apply to anything. और उसके बाद, however the question went, whenever you have to use ये पर्ची और ये सारी चीज़ें, there's some mentalism or basic magic going on. I don't think Bhageshwar Baba would be that good with mentalism or magic to do many complicated things, but there are a lot of simple things you can do as well. Pre-show होता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ होती हैं. क्या हाल है गौरव? How are you, man? It's been a while. Tararara, it's the motherfucking D-O-double-G, Snoop Dogg. Show more magic, please. Alright, man. I'll have to bring my table in again. Don't mind. Gaurav also used to do magic. Do you still do magic, Gaurav? Alright, let me just read this real quick. Alright, guys, come on. We gotta do some work. We gotta make it somewhat productive, right? मुकुल कह रहा है वो बता देता है कि आपकी 2 शादी हुई हैं, एक बच्चा है 6 साल की. How? There are a lot of ways you can do that. Most of it includes pre-show. अंकल आंटी ठीक हैं, तबीयत दोनों की? Yes, bro. Yep, been a while, have been caught up by life. Saw your video about your short film. How can I watch it? यार अभी I've just sent it काफ़ी short film festivals में, and let's see what happens there. So इसलिए I'm trying not to do a public screening because before we get to some of those things. उसके बाद I'll announce it. I'll scream at the top of my lungs to come and see. By the way, none of these guys created these magic tricks. Pre-show, it's a concept. I don't want to reveal too much about magic. You know, there are a lot of people who are doing magic and mentalism still, right? There are different ways you can get information about people and different, without them knowing you got the information, which doesn't include stalking. The Gyan Vapi, that mosque case took a fresh turn this week, with 11 people applying for copies of the ASI report. Lawyers representing the Hindu side insist that they will be on the verge of victory once the survey clarifies the Chiling fountain debate. Alright, earlier this week, the Varanasi court had asked the Archaeological Survey of India to make the report public and provide hard copies to both sides. The ASI has said that there existed a large Hindu temple prior to the construction of the existing structure. This is the conclusive finding of the ASI, said Advocate Vishnu Shankar Jain. Alright. A structure found on the premises during a court-mandated survey of building located next to the Kashi Vishwanath temple is at the center of the conflict. The Hindu side claims that the Chiling, while the Muslim side has doubted it a fountain. Oh, is it the same fountain जिसमें वो Nupur Sharma वाला scene हुआ था सारा? और बताना bro, please, it's interesting. I'll get back to it. Just let me read it थोड़ा सा. A Supreme Court order after discovering site has doubted fountain. The Vazu area was sealed in 2022 following a Supreme Court order after discovering the purported Chiling. Alright, I don't know what this word means. Appear or stated to be true, though not necessarily so. Alleged. Okay, it's alleged. Purported. Alright. There's the word of the day, guys. Purported. The Archaeological Survey of India has carried out a scientific survey of the Gyan Vapi premises following a district court order passed in July 2023. The ASI had sought to determine whether the mosque was constructed over a pre-existing structure of Hindu temple. He says the ASI has there exists a large Hindu temple. Alright.
In January this year, the Apex Court had allowed an application by women Hindu petitioners that sought direction for cleaning the entire Wazu Khana area of the Gyanvapi Mosque. आज मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही थोड़ा सा, my cervical and everything. As of now, the Wazu area is sealed and the area has been cleaned. Its custody is with the Varanasi district magistrate right now. I can say we will be on the verge of victory after the ASI survey report comes in. I am confident that we will be able to see the day when Gyanvapi will be free of this illegal encroachment, Jain told. Alright. So I added 11 people including from both Hindu and Muslim side applied for copies of ASI survey report of the Gyanvapi mosque complex adjoining the Kashi Vishwanath temple here on Thursday, Council of the Hindu litigants said. The applications are like... Who wrote this blog? The applications are likely to be to get the report either on Thursday or Monday after the scrutiny of the applications, Hindu side council mandate, Mohan Yadav said. Bageshwar Dham might also be doing dual reality. हाँ that's हाँ मैंने सोचा था वो जब दिखाता है ना, मैंने एक ही वीडियो देखी उसकी, nobody really sees the हाँ I saw one video. हाँ तो he might be doing usually यार Gaurav I doubt pre-show work इन लोगों में थोड़ा सा, but to be honest you can't really doubt anything with these guys, right? But हाँ you're right. But I think, by the way, how often do you come to Delhi now? Would you like to catch up? Sure, man, sure. I'll text you. I'll drop you a text the next time I'm coming. We'll have some fun. The applications are likely to get following an order of the district passed on July 21st last year. The Archaeological Survey of India carried out a scientific survey of Gyanvapi premises to determine whether the mosque was constructed over a pre-existing structure of Hindu temple. Advocate Vishnu Shankar Jain represented the Hindu side in the Gyanvapi mosque case, said on the Thursday that they will be on the verge of victory. How many times are you going to say this? Meanwhile, the Varanasi District Court on Wednesday asked that the Archaeological Survey of India report made public. Oh my God! It is the same information again and again. After the court's decision, Advocate Hari Shankar Jain, the counsel for the Hindu side, claimed that there is evidence that shows that Mandir was demolished to make way for construction of the mosque. Speaking to ANI on Wednesday, Advocate Jain said a lot of objections were raised to making the ASI report public. However, after hearing the arguments on both sides, the learned court ruled in favor of making the reports available for both parties. And the report will be made public, and everyone will get to know what's in it. On January 16, the Supreme Court allowed an application by women Hindu petitioners seeking the direction for the cleaning of the entire area of Gyanvapi Mosque, where the alleged Chiling was found, and ensuring that the space question was in hygienic state. The area of Wazu Khana was sealed in 2022 following a Supreme Court order after discovering what she is said to be Chiling. The structure, which was claimed to be a Chiling by the Hindu side and a fountain by the Muslim side, was found in the mosque premises on the May 16, 2022 during a court-mandated survey of the building located next to Kashi Vishwanath temple. I think this is the temple जिसमें वो नूपुर शर्मा वाला scene हुआ था सारा, right? If I'm not mistaken. I could be mistaken. And the Wazu... Alright. The Wazu area is at the center of the Gyanvapi Mosque Kashi Vishwanath temple dispute in this case, with both sides taking claim that structure discovered during the court-mandated survey. Alright, Varanasi, Jan 25th. 11 people, including from both Hindu and Muslim side, appealed for the copies of ASI survey report to be report on the Gyanvapi Mosque complex adjoining the Kashi Vishwanath temple here on the Thursday. Council of Hindu legislation said the applicants are likely to get the report either on Thursday or Monday. Dude, क्या मैं same चीज़ बार-बार पढ़ रहा हूँ, or is it just repeated? Am I reading the same thing again and again? Following an order of the district court passed on July 21st last year, the Archaeological Survey of India carried out the scientific survey of the Gyanvapi premises to determine whether the mosque was constructed. I'm definitely reading the same thing again. Till afternoon, 11 persons have appealed from both sides of COP. Oh my God. What the fuck am I missing? Yadav said advocates represent the 5 petitioners from the Hindu side, Anjuman, Intizamiya Masjid Committee, Kashi Vishwanath Trust, the state government, and the chief secretary, the home secretary, and the Varanasi district magistrate have
applied for the copy of the survey report, on which the district judge A.K. Vishvesh ruled that the ASI survey report on the Gyanpuri Mosque complex will be given to both Hindu and Muslim sites. I know. I just read it on your fucking blog. The ongoing controversy of West Bengal's fake cast. Fuck off. You don't have content. You don't have fucking content. Alright, what do you guys want to get into? Fuck off. They don't have content. There's not much there to be seen. That's for sure. Okay, so what do you want to get into? Tell me. You want to get into Bhageshwar Dham? Let's watch Bhageshwar Dham. All right. कहाँ से हैं? गोरखपुर। गोरखपुर में कहाँ से? भगवान सीताराम। इस तरफ मुंह करो। बात। Why would you cut hair, by the way? साधु जी। अरे पैस की आँख। साधु जी। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। आज समूचे क्षेत्र में बहुत ज्यादा समुदाय हो And I've seen he hides what he writes. गया है। हमारी प्रार्थना है कि आप अपनी खुद की सुरक्षा बहुत गंभीरता से करें। प्रशासन आपकी मदद के लिए ही है, उनका भी सपोर्ट करें और भीड़ भाड़ वाली जगह से कृपा करके बचें। सबकी सामूहिक अर्जी स्वीकार होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है, सबकी अर्जी लगेगी। क्या समाधान आप हनुमान जी महाराज के चरणों से चाहते हैं? पूछो। ठीक, क्या हो गया है हम बताएंगे। और आपसे तो बहुत नाराज है, आपको छोड़ दिया है, मतलब नहीं रखना, हमारे लिए तो मर गई है, ऐसा आपके माई के पक्ष में बोल रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं? माइक ले लो बहना, पढ़ो। धन कृपा हो जावे, काम नहीं हो रहे, स्वास्थ्य की परेशानी बच्ची बनी, बच्चों पर कृपा चाहती हैं, उन वह नाम रोशन करेंगे, सनातन धर्म का कार्य करेंगे। मायके में कलेश बना हुआ है, आपसे नाता तोड़ दिया है, भाई व बहन आपको मरा हुआ मानते हैं, कोई मतलब नहीं है, उनको गलत फहमी भर दी गई है, परिवार द्वारा भर दी गई है, जिस कारण से वह दूर हुए हैं। एक भूल आपसे भी हुई है जो हमें माइक से नहीं बतानी चाहिए, समझ गए? उसी भूल के कारण कलेश बना है, लेकिन जाओ अगली रक्षाबंधन तक सामंजस्य हो जाएगा और तुम राखी बांध पाओगी, आशीर्वाद है। बाबा जी, हम लोग के घर पे कौन ऐसा कर रहा है वो बता सकते हैं? बताएं। सब चीज बंधा हुआ है, बंधन में ही है। 3 साल से कुछ भी नहीं कर पा रहे हम लोग। 2020 से। By the way, this was the real question of the lady. कि घर में कौन ऐसा कर रहा है? This was the real question. If he knew, he would have known. जी। ये हमने उनका भी बागेश्वर बाबा मेरा बाउंस बैक करा दो। रेस निकाला। साधु जी, साधु जी, सीताराम, साधु जी, सीताराम। हाँ, आपने जो अर्जी बैठे बैठे दरबार में लगाई टोटका वाली, वो भी सत्य है, बंधन है, और माइक से हम उनका नाम नहीं बता रहे, लेकिन आपको समझाएं दे रहे, आपको पता लग जाएगा। हम माइक पर नहीं बोलेंगे क्योंकि उससे कलेश बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आप माइक नीचे कर लो। ये जो ऊपर में गोला है, गोला भर आपको पढ़ना है, इसमें अमुक 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 डॉट डॉट आ रहे हैं, ठीक है? इन्होंने किया है, यही पीछे लगी हैं, इन्होंने ही उपद्रव मचाया है। All right, so why wouldn't he reveal that detail, right? And notice how he said what he said. What's up, Janvi? How are you? Notice how he said what he said. He didn't say कि मैंने नाम लिख दिया है. He said कि मैं बता नहीं रहा कौन है, डायरेक्टली नहीं बता रहा. ये पढ़ के आपको समझ आ जाएगा. So no, he could have written a lot of things. बहुत कुछ भी लिखा हो सकता है, right? But most likely he would write something vague which her mind would connect it to a person. So he's not saying कि मैं ऐसा मैंने ये लिख दिया कि किसने करा है. He's basically saying कि ये देख के तुम्हें समझ आ जाएगा. तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर तुम्हें लिखता हूँ, लाइक यू कम टू मी विद अ प्रॉब्लम, ठीक है? मैं कहता हूँ जो तुम्हारे साथ रहता है, जिसमें बहुत ज़्यादा अहंकार है, लेकिन तुम्हारी चिंता भी बहुत करता है और ये सब, यू विल कनेक्ट दैट टू अ पर्सन. हु इज़ द पर्सन इन योर फैमिली हु हैज़ द मोस्ट प्राइड इन योर एक्सटेंडेड फैमिली? यू प्रॉबली नो. इफ़ आई जस्ट राइट कि जिसमें बहुत ज़्यादा अहंकार है तुम्हारे खानदान में, ये उसने करा है,
आई हैव नो फकिंग आइडिया क्या किसने करा है, बट यू नो कि अहंकार किसमें है, राइट? डू यू नो राम रहीम हु इज़ इन प्रिजन फॉर and murder is still followed by and worshipped by many people, and it seems unreal. I know that. Yes, I know. उन्होंने ही धमकियां दी हैं। It doesn't seem unreal to me. It seems I understand. People need gods. बर्बाद करने के लिए आपके पति का और आपका चित्र दिया है, मायके में दिया है, वहां से टोटका करवाया है, और जिनका हमने यह संकेत लिखा यही है, लेकिन आप क्लेश नहीं करेंगे, आपको पूर्ववत पता था। माइक से बोलो क्या ये बात एकदम सही? बस ये वाली बात पर माइक से नहीं, ये सही है? ये वाली बात माइक से नहीं, this is very important for him कि she doesn't say exactly. Okay, how is YouTube recognizing कि this is not my content? Wow. तो मिटा दें हम, जाओ पंजाब। Does that make sense to you? That's basic magic tricks, जय right? श्री राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। All right, guys, chill. Will people still follow me if I go to jail? I think people still follow Dr. Vivek Bindra कुछ हद तक. Fucking hell. I don't know why do you guys why do people care? When I used to do magic, I've had people ask me if this was real. I've had that अपनी लाइफ में भी. जब मैं मैजिक करता था, कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि ये सच में कुछ होता है, कुछ वो होता है, कुछ वो. No dude, it's all fucking tricks. That's what I always said. कहाँ से आएंगे जी? पास में ही है? अच्छा, नजदीक ही है। छतारी बुलंद से सिकंदराबाद दिल्ली तरफ है? अच्छा, बोलिए क्या चाहिए आपको? क्या हो गया? क्या हो जाता है? सास ससुर परेशान था, क्या अपराधी? हाँ? अच्छा, यही है यहाँ कहाँ? सास ससुर से आप रात नहीं कि आपसे सास ससुर परेशान था? शायद वो लोग परेशान। अच्छा, हमें लगा कि आप आती उनसे। चलिए, और कोई प्रश्न? एक और लिखा है। प्रश्न तो बहुत सारे हैं। हाँ, जल्दी बोल दीजिए, कम से कम 200 को भी समय। हाँ, नजदीक आओ बहन, हमने लिखा आपके घर में उपद्रव मचा रहता है। माइक लीजिए, क्या यही लिखा? हाँ जी। आपके घर में उपद्रव मचा रहता है, कलेश रहता, परेशान रहते हैं। 2019 से ज्यादा बढ़ गया है आपका कलेश। सास ससुर से जॉब कृपा हो जाएगी, बुद्धि अपनी शांत रखें, एक्स्ट्रा बोले ना, जॉब लग जाएगी तो अपने आप कलेश शांत। Okay, there's definitely pre-show stuff going on. That's for sure. That's what it seems like, pre-show stuff. एक बाबा हमारा घर एक सेकंड, और एक बाबा हमारे घर बुरी शक्ति उतारने आए थे। उन्होंने वूडू मैजिक वगैरह किया है और बड़वा 1500 रुपये लेके चला गया, चोर साला। I never agreed to it, but my parents did. Well, it's okay guys. It's okay. If it helps you believe in something, why not, right? हो जाए आशीर्वाद। बोल भागेश्वर धाम की। इकट्ठो रहो नहीं जाता। तुम्हें पता है प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? तो मैं अपने कल की एक चीज़ बताता हूँ। तो लेट मी टेल यू अबाउट समथिंग कॉल्ड द प्लेसिबो इफेक्ट. What is the placebo effect? All right. When a person's physical or mental health appears to improve after taking a placebo or a dummy treatment, असली ट्रीटमेंट नहीं, अगर तुम्हें तो बेसिकली अगर मैं मानता हूँ कि तुम डॉक्टर हो, जैसे बिंद्रा साहब मैं मानता हूँ आप डॉक्टर हो, राइट? मैं तुम्हारे पास आया, मेरे सर दर्द हो रहा है, तूने मुझे एक चीनी की गोली दे दी, मुझे तो लगता है ना तू डॉक्टर है, तूने मुझे सही दवाई दी, अगर मैं वो खा लूँ मेरे सर दर्द ठीक हो जाता है कई बार, अगर वो नॉर्मल सी चीज़ है तो. कल रात को ना आई नो वट प्लेसिबो इफेक्ट इज, ठीक है, आई नो, राइट? अब कल रात को क्या होता है, मेरा सर दर्द होता है, कल रात को स्ट्रीम करने के बाद मेरा सर दर्द हो रहा है बुरी तरह से. मैंने एक बहुत पहले रील देखी थी कि गर्म पानी में नमक डाल के पी लें तो सर दर्द ठीक हो जाता है. भैंस क्या, मैंने पानी गर्म करा, मैंने नमक डाला, मैंने पहला घूंट लिया, आई फेल्ट मेरा सर इतना ठीक हो गया. आई न्यू इट वॉज प्लेसिबो, इट स्टिल वर्कड ऑन मी. मतलब पहला घूंट लेती, हो सकता है देयर माइट बी सम ट्रुथ टू इट, आई डोंट नो, लेकिन लिटरली ऐसा हल्का किया एंड oh fuck, it's so much better. And then I'm like, why am I so stupid? This is obviously placebo. ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बॉडी में सॉल्ट की इतनी कमी थी कि करते ही ऐसे हो गया, ठीक हो गया. धाम पर पहुंचना है, जो भी हो बनेगा. होम्योपैथी और ये सारी मेडिसिन ऐसे काम करती हैं, बाय द वे. कलेश शांत में शांति आदि से हुई है. बाय दैट आई मीन दे डोंट वर्क. तो अपने वाणी पे लगाम दें हमने. हमारी बात समझ रहे हैं? उत्तर का प्रति उत्तर प्लस पॉइंट का नहीं देना है. हाँ बिल्कुल, अब समझ गई हमारी भाषा बहन जी आप. और हमें लगा कि अगर टेप लगा के घरे जाओ तो कलेश आदि से शांत. कारण भी हमने बता दो, निवारण भी बता दो. आप चुप रहो, उनका काम है, उनकी वृत्ति वो पहले से ही ऐसे.
ऐसा भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं, पहले से भी वो ऐसे हैं। और छोटी छोटी बातों को लेकर आप त्योहारों के दिन 10-10, 15-15 दिन लगातार उपद्रव मचाते हैं, ये बहुत गलत है। फिर मरने की स्थिति को भग जाएं, ये जो छोड़ दें, फिर जो छोड़ दें, ऐसे विचारों से आप घिरे रहते हैं। हमारी बात समझ में ठीक बहन जी? तो ये बिल्कुल बंद कीजिए। इसका मूल कारण है आप खुद अनफनाती रहती हैं। अपने जवान पर लगाम दीजिए, एकदम शांत रहिए, उनका आशीर्वाद समझ करके सुनिए। This is probably pre-show stuff, and pre-show as in it depends on कैसी तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है. Basically you can have people around and वो लोग पहले से with अलग pretense, basically like telepathic spiritual healing works only when people know they are going to get healed, but if they didn't know if they are going to get healed, then maybe it won't help them. उसमें भी बहुत सारी चीज़ होती हैं जो ये हीलिंग वीलिंग करते हैं स्टेज पे विद वेरी हाई म्यूजिक वगैरह. यार तुम्हारे घुटने में अगर दर्द है, एवेंजर्स जाके देखो पीवीआर में, दर्द चला जाएगा जब वो हाई मोमेंट्स होते हैं. क्यों? क्योंकि म्यूजिक ऐसे चल रहा होता है और सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, तो जो एड्रेनलिन रश आता है ना बॉडी में, उससे ही काफ़ी सारा वो पेन किलर की तरह काम करता है बेसिकली. तो ये जो और ये सारी साउंड इफेक्ट्स सारे होते हैं, ये सारी चीज़ें रहती है, प्लस द प्लेसिबो ऑफ हीलिंग, इट रियली फील्स लाइक समवन हैज हील्ड यू. दैट इज नेवर द केस. जॉब की तैयारी कीजिए, तैयारी करेंगे तभी योग बनेगा, नहीं तो अभी आप जो है विगत 1.5 साल से तो विचलित हैं. 1.5 साल से कोई तैयारी आपकी स्थिरता वाली नहीं है, ना जॉब के योग की तैयारी है. 100% दिस इज प्री-शो. यू कैन सी हाउ डिफरेंट दिस इज फ्रॉम द अदर वीडियो जो हमने देखी थी, दूसरी क्लिप. उसमें ही गेव ऑलमोस्ट नो स्पेसिफिक डिटेल्स. इसमें ही इज गिविंग एक्सट्रीमली स्पेसिफिक डिटेल्स. इसलिए तैयारी करें. सास ससुर की गालियां आप तैयारी आपकी स्थिरता वाली नहीं है, ना जॉब के योग की तैयारी है, इसलिए तैयारी करें. सास ससुर की गालियां आप He said what I think he said, right? Sounds sorry. सुनो, कल ये शादी से शांति की आशीर्वाद है. बोली सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की, सतगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की. एकदम सही. I don't like the argument जब लोग कहते हैं ना कि ओ जो लोग अनपढ़ होते हैं वो इन चीज़ों में फंस जाते हैं. It has nothing to do with पढ़ा लिखा और अनपढ़. If someone is educated about the specific things as if mentalism, pre-show stuff, magic, placebo effect, फिर you can say that. लेकिन जो जनरल स्टडीज होती हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनी ऑफ दिस. जाओ बहन, बुरा तो नहीं लगो बहन, हम तना के स्पष्ट बोल दे. खुश रहो. सीताराम भगवान की, लेकिन पेशी जरूर करना बहन जी. हाँ, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बालाजी की, गौ माता की. इसके बाद ही इज डूइंग सम मैजिक ट्रिक्स, राइट? काफ़ी सारे बाबाओं को तो मैजिक ट्रिक करने की जरूरत ही नहीं है. दे डोंट नीड टू डू दैट. वो कौन से बाबा तेरे आके कहते थे तुमने गोलगप्पा नहीं खाया? निर्मल बाबा. ही डिडंट नीड टू डू एनी ऑफ द मैजिक ट्रिक्स, right? So it has nothing to do with magic tricks or not. Basically it has nothing to do with common sense or not. So Anisha, a mentalist, once mentioned that she offered an ill person water that had healing capacity. If it was normal water, but after a few years the person's condition really improved. The condition can improve. It has nothing to do with the water, probably. The person probably did a lot of different things for that specific condition. Okay, yeah, why do, oh my god, I have nothing against that girl, Sohanisha. Oh my god, but why would you, see, क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं यार, यहाँ पर ये सुपरस्टिशन वाली चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा है, बहुत हद से ज़्यादा है. And let me give her a charitable interpretation. Basically वो she might be wondering, अरे देखो क्या मस्ती हो गई. But anyone who's into mentalism, they know this shit. They know placebo. They know all of these things. They know placebo does not give you long-lasting effects. They know that. Maybe she was wondering. Maybe. I don't think so. I'm trying to be charitable with my interpretation. The fact that she said that, it seems so... I'm trying to think कुछ ऐसा मैं misunderstand ना कर रहा हूँ. But otherwise it seems so self-absorbed. All right, it is simple. It's all about timing. Right, guys? This is time. Once again, we just spoke of this. This is time. These are different moments in time, right? किसी बंदे को कुछ issue है. No, she didn't mention it like she cured him, but she was saying that when she offered ill guy water, it made restore his faith in life and gave him hope. Wait, that... but your last comment doesn't make sense.
Sohani Shah, mentalist, once mentioned that she offered an ill person water that had healing capacity. It was normal water, but after a few years, the person's condition really improved. What do you mean by a condition? What condition are we talking about here? Okay, maybe I completely misunderstood your point. The point is, let's say ये जो point in time है, यहाँ पर वो incident हुआ Sohani Shah वाला, right? और ये point है जब वो फिर से मिले and the guy was like, oh, my condition really improved. उसके बीच में उसने इतनी अलग अलग चीज़ें कर ली हैं ना बंदे ने, और उससे पहले भी उस कंडीशन के लिए जो भी उसकी कंडीशन थी, एनी, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट करेक्टली, एनी ऑफ दीज थिंग्स कुड हैव ब्रॉट हिम हेयर कि ये ठीक हो गया, नॉट द नॉर्मल वाटर, राइट? Let me find the video link. I can't explain properly. Sure. But generally, let's not even talk about Sohani Shah, right? She was probably in the right. You may have miswrote it. Maybe I have misunderstood it. The point is, ऐसा actual में होता है, right? Sohani Shah को for example ले लेते हैं. तो यहाँ पर she offered him water, ठीक है? यहाँ पर he is healed. And अब इतनी जो बीच में जो भी चीज़ें उसने करी ना, हमारा दिमाग is prone to forget all of these things because why? This is the simplest explanation for the healing. If we were not going for the simplest explanation, हम सारे डॉक्टर्स नहीं होते क्या? We are looking for the simplest explanations, right? तुम खड़े हो भगवान, बड़े बालों वाले हनुमान जी, हाँ खड़े हो, बड़ा प्यारा स्वरूप है आपका, धोती भी पहने हो, वाह 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 वाह। हम आपकी अर्जी नहीं लगाएंगे, आप हम जब तक पर्चा लिख लेते हैं तब तक इस गली से आप पीछे चले जाओ, तो महिलाओं में पुरुषों में आप जिसको उठा लाओगे अपने वर्ग को छोड़ के उसी का पर्चा निकल आएगा। बोले बाकी राम की नहीं, जरूरी नहीं माइक की, अब इनके आधार पर दरबार चलेगा। ये जिनको उठाएंगे उनकी अर्जी लगेगी, पर ये उठाएंगे भी उसी को जिसका पर्चा हम लिख लेंगे। बोले सच्चे दरबार की। रुक जा। Oh my God. All right. महाराज अभी मत उठा देना, वरना तो हो जाएगा महाराज को ये सेटिंग वाले आए। Sohani Shah Lalan Top interview and watch it at 46 minutes. All right. There it is. आज हमारे न्यूज़ रूम में जादू होगा। नहीं पड़ी। प्लेसिबो इफेक्ट जो होता है। She's talking about placebo literally. वो मैंने रियल लाइफ मैं नासिक में थी। इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, कई लोगों के लिए नया शब्द होगा। बता रही हूँ। ये इस बारे में पहले बोल चुकी हूँ, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि ये इंसिडेंट इसलिए एक्सप्लेन मैं वापस कर रही हूँ, पहले भी बोल चुकी हूँ कि मेरे लिए एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इंसिडेंट था। नासिक में शोज कर रही थी, मैं 13 साल की थी। शो के बाद जैसे लोग मिलते हैं तो कुछ मिले, और एक व्यक्ति बहुत दूर ऑडियंस में ही कहीं बैठे थे, तो मुझे बोला उनसे आपसे मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। तो मैं गई, तो मुझे लगा यार वो आ क्यों नहीं रहे, मैं क्यों जा रही हूँ। मैंने कहा चलिए, वो धीरे धीरे उठ के आए, तो देखा कि वो चल नहीं पा रहे थे बराबर से, धीरे धीरे। जब पास में आया तो देखा उनके चेहरे पे इधर से बॉइल्स हो रखे हैं, नॉर्मल नहीं था वो चेहरा जो मैंने देखा। जब उन्हें बोलना शुरू करा तो आवाज़ ही एकदम ऐसी थी कि किसी ने यहाँ पे अटका के रखी है कुछ। मराठी बोल रहे थे, जब थोड़ा टूटी फूटी मैं समझी तो समझ पड़ा कि उन्होंने मस्कीटो रिपेलेंट पी लिया है, और थोड़ा सा भी इसलिए ठीक है क्योंकि फिर भी थोड़ा ही बोल पा रहे हैं, और उनको मल्टीपल फिजिकल और मेंटल इश्यूज़ है, और वो चाहते हैं कि मैं जादू से उन्हें ठीक करूँ, और मैं उनकी लास्ट होप हूँ। अगर मैंने ठीक नहीं किया तो नासिक के ब्रिज से कूद जाएंगे। कहाँ से कूदेंगे? नासिक के कोई ब्रिज से कूद जाएंगे। अच्छा, अब मैं हूँ 13 साल की, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात रखना, इन अ नॉन डिजिटल वर्ल्ड। तो जो इन्फॉर्मेशन जो आज हम सुसाइडल टेंडेंसीज के बारे में पढ़ते हैं वो सब समझ नहीं थी मुझे सिर्फ जादू करना आता था। तो मैंने सिर्फ जादू से पानी अपियर किया उनके सामने, मटका दही का जो मटका होता है वो पड़ा था, मैंने पहले तो ऐसे दिया थोड़ा सा पानी, उनको दिया, उनको बोला कि आप इसे पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मैंने 2 घूंट पिया, फिर ऐसे ऐसे कुछ किया, मैं बहुत घबरा रही थी। उसके बाद उन्होंने बोला मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने और पानी निकाला और ऐसे उनके सामने मैजिक से ऐसे पानी अपीयर करा और मटका भर दिया और उनको दिया। कोई मेरे को जज नहीं करेगा, क्योंकि 13 साल में मेरी यही समझ थी। मैंने उनको बोला 2 घूंट सुबह पीजिए, 2 घूंट शाम को पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। डॉक्टर हम यही सुनते हैं, मैंने भी डॉक्टर से ये सुना था, उतनी समझ और वो दिया, क्योंकि इधर स्कोप समझ पड़ गया था कि एक्सप्लेनेशन का मोमेंट नहीं है ये, इधर कुछ देना पड़ेगा, उम्मीद देनी पड़ेगी। वो लेके गए, मैं मेरे शो में लग गई। नासिक से हम चले गए औरंगाबाद, मेरे तो शो चलते रहते थे। अब 1 महीना औरंगाबाद हमारे शो चल रहे, टापड़िया नाट्यगृह, वहाँ पे जगह। मुझे एक पोस्ट कार्ड आता है करीबन 1.5-2 महीने बाद, मराठी में लिखा हुआ था ट्रांसलेटेड टू, आपके पानी से मेरी तबीयत ठीक हुई है, मैंने डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया है, वो पानी में चमत्कार था, आप भगवान हो। ये पोस्ट कार्ड मेरे पास आज भी संभला हुआ है। और वो पढ़कर मैंने तो पानी दिया था जो हम रोज पीते हैं, तो इससे वो ठीक कैसे हो गए? ये मेरे लिए जादू था कि ये तो ठीक हो ही नहीं सकते उस पानी से। तब जाके मुझे प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब समझ पड़ा कि ओ, जो बीमारी हमारे मन में जो है, जो आधा प्रॉब्लम उनका 30% ऑफ नेगेटिविटी इन द माइंड थी और आधी फिजिकल थी, जो 30% नेगेटिविटी वो पानी से ठीक, क्योंकि उनको उम्मीद मिल गई। वो प्लेसिबो इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं वो पानी में दे दिया। अब ऐसे बहुत और इंसिडेंट्स हैं,
बहुत. Yeah, that's come on. Okay, she's partly right. She's partly right. Right? Placebo effect can help you feel better. It cannot necessarily heal you. Oh my god! If you just watch this video, में she explained it. She explained it, and she completely missed the point. Maybe I don't know why. उसके पोस्ट कार्ड में लिखा हुआ है कि मैंने डॉक्टर से इलाज करवाना शुरू कर दिया. That's what healed him. Placebo might have helped him felt better. लेकिन he started getting medical help from a real doctor. That's what healed him. Placebo effect did not heal him. That's the entire point. Guys, okay, I have done oh my god, I have done extremely basic hypnosis, right? I have known people जिनको आँखों में काफ़ी इशू रहता है, तो I can show them a card, or any hypnotist can. I cannot hypnotize anyone now, right? I can show them a card and उनको blur दिखेगा बिना चश्मे के. I can hypnotize them and let them feel और make them believe कि नहीं तुमको अब क्लियर दिखेगा, तो उनको लगेगा उनको क्लियर दिख रहा है. उसका मतलब नहीं उनकी आई साइट हील हो गई. They are just wrong in their belief. There's a big difference. मैं इतना मतलब ऐसे वो हो गए इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज तेरा सर दर्द कैसे हील हुआ था फिर प्लेसिबो से. मेरा सर दर्द हील नहीं हुआ था. इट वर्कड एज अ पेन किलर. अ पेन किलर डजंट हील एनीथिंग, राइट? अगर तुम्हें किसी चीज तेरा हाथ टूटा है, लेट्स से मैंने तेरा हाथ तोड़ दिया, उसके बाद मैंने तुझे एक पेन किलर दे दिया, तो तेरा हाथ ठीक थोड़ी हो गया, तेरा पेन गया है, राइट? पेन इज अ वेरी, it's not a subjective experience, it's a feeling that you have which is indicating something else, right? So you can push that feeling down. तो कोई भी एक long term चीज, अगर मेरी बॉडी में पॉइजन आ गया, are you telling me I can heal it with placebo? No. उसके लेटर में लिखा है, she said in the letter it says कि I started taking medical help. Did you not? ये पोस्ट कार्ड मेरे पास आज भी संभला हुआ है. डॉक्टर सब यही सुनते हैं. मैंने भी डॉक्टर से ये सुना था, उतनी समझ और वो दिया, क्योंकि इधर स्कोप समझ पड़ गया था, एक्सप्लेनेशन का मोमेंट नहीं है ये, इधर कुछ देना पड़ेगा, उम्मीद देनी पड़ेगी. वो लेके गए, मैं मेरे शो में लग गई. नासिक से हम चले औरंगाबाद, मेरे तो शो चलते रहते थे. अब एक महीना औरंगाबाद हमारे शो चलते, टापड़ियाँ नाते रहो वहाँ पे जगह. मुझे पोस्ट कार्ड आता है करीबन 1.5-2 महीने बाद, मराठी में लिखा हुआ था ट्रांसलेटेड टू. आपके पानी से मेरी तबीयत ठीक हुई है, मैंने डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया है, वो पानी में चमत्कार था, भगवान हो. ये पोस्ट कार्ड मेरे पास आज भी संभला हुआ है. मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया. डिड यू नॉट हियर दैट? Yeah, I agree 100%. Placebo effect didn't heal the guy, but it was hope that Sohani offered him in form of water, no? If she didn't had given him water, then what would he still go to the doctor? Why would he not? Why wouldn't he? Only talking about this specific case. No, but why wouldn't he? Is he trying to commit suicide? I hate Sohani, by the way. अहंकार दिख रहा था साफ. But why would he not go to the doctor? अगर मैंने जहर पी लिया तो मैं मैजिशियन के पास जाऊंगा ही क्यों? Even if I'm trying to kill myself, तो मैं मैजिशियन से क्यों बोलूँगा कि तुम बचा लो मुझे? This story doesn't make sense at all. By the way, I don't want to hate on her that much. I haven't even seen her enough for any of this. I don't want to come off that negative. I don't want to nitpick the story. The story doesn't make sense either. By the way, no magician in the world can just go there and randomly make water appear, right? You need to have a lot of things figured out how you're going to make water appear. So I don't want to nitpick the story and shit like that. Fuck it, doesn't matter. कुछ details याद नहीं होंगी. Main story, she's getting to a point. वो hope की बात कर रही है, which is fine. Hope की बात कर रही है. But the placebo effect did not heal her. Him, the guy. Right? And the fact that she's explaining the placebo effect, she's explaining the power of hope, that is not true. That's not what we're doing here. That's not what you're talking about. That's not what healed him. Yeah, people are dumb. They go to Babas instead of psychologist. That's not dumb. That's not dumb either. What do you think about the host Saurabh? यार मैंने बहुत कम देखे लंदन टॉप भी. मैं हर चीज़ के बारे में ये क्या कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं वेट करता हूँ. नहीं, but I have nothing against the guy. I think he asked question very humbly, I think. लेकिन चैलेंज करने वाले लोग बहुत कम देखे हैं मैंने इंडिया में. मैंने शायद देखा ही नहीं है कोई इंटरव्यूअर जो अच्छे से चैलेंज करता हो लोगों को. In the entertainment field, मतलब पॉलिटिक्स में तो probably there are a lot of them. I would hope so. और वो पढ़कर मैंने तो पानी दिया था जो हम रोज पीते हैं. ये तो इससे वो ठीक कैसे हो गए? ये मेरे लिए जादू था कि ये तो ठीक हो ही नहीं सकते उस पानी से. तब जाके मुझे प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब समझ पड़ा कि ओ जो बीमारी हमारे मन में जो But you see, she is well intentioned. She's trying to explain placebo effect. She's trying to disrupt a superstition, but at the same time she's bringing another one up. What do you think about porn?
What do I think about it? नीलेश, मैंने बहुत कम देखी. ये तो एक में से नहीं लग सकता था, कंफ्यूज कर रहा हूँ. आधा प्रॉब्लम का 30% ऑफ नेगेटिविटी इन द माइंड थी और आधी फिजिकल थी. तो 30% नेगेटिविटी वो पानी से थी क्योंकि उनको उम्मीद मिल गई. तो प्लीसी वो इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं वो पानी में दे दिया. अब ऐसे बहुत और इंसिडेंट्स, बहुत बीमार हो जाते तो बच्चों को मेरे पास लेके आते थे कि आप हाथ रखो, तो मैंने नहीं होगा कि मेरे हाथ नहीं होगा. आपको नहीं पता हो जाएगा. उनको मुझे मैं नहीं, आपके अंदर देवी शक्ति है. कोई व्यक्ति अगर 8 साल की बच्ची को स्टेज पे हवा में उड़ते हुए देखता है अपने ऊपर, उनको लगता है मेरे में देवी शक्ति है. ठीक है, तो राजस्थान आप अजमेर की बात है, आप इस पे हाथ रखो, ये बच्चा मेरा ठीक होगा. माँ ये मेरे पास अपने बच्चे को लेकर क्या करूं मैं. पर इतने जो मेरे अनुभव हुए बचपन में, मेरे पिताजी 13 साल की उम्र में मुझे बोला बेटा तुझे किताब लिखनी चाहिए, तो किताब जा बोल रहे थे. अब किताब लिखने की जब बात आई, मैंने कहा पापा बात तो बड़ी अच्छी है, लिखेंगे कैसे. हम बोलते हिंदी लिखनी नहीं आती, अंग्रेजी का एबीसीडी थोड़ा बहुत आता है, कैट बैट डॉग आता था तब तक फर्स्ट स्टैंडर्ड में, पर अंग्रेजी बोलनी नहीं आती. 13 साल की उम्र में मैंने मैथ्स इंग्लिश और साइंस पे काम किया. और जो मेरे आसपास लोग थे मुझे ज्यादा पढ़े थे, जो मेरे शो में पढ़ना किस्सा था वो चौथी पढ़ा था, उसमें मैंने मैथ्स सीखा है. जो मेरे मैथ्स से जो लीड असिस्टेंट थी. I sort of get her point as well, कुछ हद तक, but now she's explaining placebo in that sense. उस टाइम पे तो I can get it. What's up Daniel, क्या हाल है? यार वही बात दिमाग में थी, पूरा लिख दूं फिर चैट शो हो ना हो, मेहनत खराब. अब तो चैट ठीक हो गई है ब्रो, अब तो चैट ठीक हो गई है हमारी. मेरे I don't want to expose magic tricks आके. डेथ नोट तो मैंने देखा ही नहीं बिल्कुल भी. अब तो बोलेगा कि नीलेश कहता है कि मैंने बहुत कम देखा है. मैंने देखा ही नहीं. मैंने इस बंदे को देखा है, शान प्राशर. आई लाइक दिस गाय, यू गाइस नो दैट. आई लाइक वेदांत रस्टी, जितना मैंने देखा है. कम तो उसको भी देखा है, ऐसे ज़्यादा नहीं देखा. So nothing really has been done much. भाई क्यों नहीं देखा? It's a gem show. Yeah, a lot of shows are great, but you cannot watch everything, right? कुमार अभिषेक हमारे साथ हैं विष्णु जैन, जिन्होंने ज्ञानवापी को लेकर एक बड़ी जीत हासिल की है एएसआई रिपोर्ट में, क्योंकि एएसआई and you like Alia Bhatt. What do you mean like Alia Bhatt? In what sense are you talking about, Dr. Saab? आई है, उसने साफ साफ ये बता दिया है कि ये भव्य मंदिर था और 17वीं शताब्दी में इसे तोड़ा गया. स्वागत है विष्णु जैन जी. विष्णु जैन जी, ये तो एएसआई की रिपोर्ट ने लिख दिया, ये 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया, बाकायदा इंस्क्रिप्शन का हवाला दिया गया. बहुत कम नहीं देखा यार, लेकिन बोलने के लिए इतना कुछ है कि मुकुल क्या ही बताऊं अबाउट समथिंग लाइक दैट, राइट. पूरे उसके साइंटिफिक सर्वे किए गए, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम चेहरे लोग इसको मानने को तैयार नहीं है. और आप देखेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है और कहा है कि ये कोई साइंटिफिक सर्वे ऐसा नहीं है. इसको आप किस तरीके से देखते हैं, चाहे ओवैसी ने कहा हो या फिर अब बहुत सारे मुस्लिम उलेमा और जो लोग हैं वो भी इस बात को. मैं मुकुल क्यों परेशान है इतना? कहना चाहता हूं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे को ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने 21 जुलाई के ऑर्डर से अपॉइंट किया था. तब किसी ने ये ऑब्जेक्शन नहीं किया था कि एएसआई विश्वसनीय संस्था नहीं है, इनको नहीं अपॉइंट. हैव यू वॉच्ड हजारों ख्वाहिशें ऐसी? नहीं, ये क्या है? ये क्या है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी, बहुत कम. यार I want to watch Shatab, guys. I want to watch Shatab. You guys don't let me watch Shatab. हजारों ख्वाहिशें ऐसी की है. अच्छा, बकायदा पिक्चर है यूट्यूब पे पूरी. Oh, is this like a soft porn movie or something? What's up, Saran Singh? I'm good, yaar. How are you? I hope it's not that. YouTube पे fast करके we can watch the whole movie together, guys. Anurag Kashyap picks his favorite films and directors and actors. अरे गुजर मैं उसे प्यासा then there was Bandit Queen साइड भी बोला. यार प्यासा देखनी है मैंने. I've heard good things about प्यासा. दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह. What are the defining directors of Indian cinema? गुजर, शेखर कपूर, and a tough choice. I have to choose only one. Bimal Roy.
Shadab I like the most. He is very very real. हाँ, unlike me. पोस्टर पे मत जाओ. सुधीर मिश्रा की कल्ट मूवी है. Oh, okay. I watched all your videos since so long. Your IQ is too good. नहीं, पागल है शाहराज. I think our music makes it very unique. What did okay. तेरा पोस्टर पे मत जाओ. Sorry bro, sorry. I didn't mean to disrespect a great movie. I didn't mean to do that. श्वेताब मत देख यार, वो मेरे को डरा देता है. मेरे को लगता है बस कल ही हुआ मेरे पे फेक रेप केस. Okay, let's not get into it today. कल और परसों maybe we can discuss it in better detail. I like this guy. By the way. ये भी मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन मैंने 2-4 इंटरव्यूज देखा. I like this guy. He's fun. And हाँ, he is someone who can challenge his guests as well. Samdish. I like him. He's nice with it. आगे क्या करने का प्लान है अब? हिंदू टेम्पल एग्जिस्टेड, ये तो समझ आ गया. आगे का क्या सीन है? नीतीश कुमार यूपीए एनडीए. It is what it is. You have learned not to be pretentious. You're getting better. Still a way to go. Yeah, it is. There is. There is always, places to go. No, it's not your fault. The poster doesn't do justice to the movie. You will get what I mean when you watch it. For sure, man. For sure. Mahiya na aaya mera. आज मैं इंसिडेंटली गाना सुन रहा था. भावरा में इसी मूवी का है. ओके. Should I just change the thumbnail? Because there's not too much of interest in here as of yet, and you guys are definitely not into it. Let's see what happens with it. The only issue I have is where does it stop? Where do we stop trying to right the wrongs of history? And अगर हम पीछे जाते हैं तो हम कितना पीछे तक जाएंगे? हम 5,000 साल पीछे जाएंगे, हम 10,000 साल पीछे जाएंगे, या हम 15,000 साल पीछे जाकर रुकेंगे? Where do we exactly stop? हमारे तो बस कालियाँ मांगी थी. हैं? अच्छा, ये तो मूवी रेफरेंस दे रहे हो एक दूसरे को. हमने तो बस कालियाँ मांगी थी, कांटों का हार मिला. कलियाँ मांगी थी, कांटों का हार मिला. मुकुल, मैं तेरे ना मुक्के मारूंगा. तो मुझे बोलता है, मैं ढंग से पढ़ता नहीं था, लिखता तो ऐसी चीज़ें हैं. हमने तो बस कलियाँ मांगी थी, कांटों का हार मिला. सर्च मुनावर फरूकी. टेल मी यू लाइक हिम और नॉट. आई डोंट लाइक एनी इंडियन कॉमेडियंस गाइस. आई डोंट लाइक मोस्ट कॉमेडियंस. ही इज़ दैट कॉमेडियन जो बिग बॉस में आया था. मैंने देखा भी नहीं, by the way, I can say that because there's types of comedies, guys. भाई, oh my god, fuck. Why are you not making videos you used to make before with that gym guy and Daksh? अब से यार, I'm not really into making those kind of videos now. अब वो मेरा मन बिल्कुल नहीं करता है. It doesn't fulfill me as a person. I would rather come here and talk to you guys every day. Me destroying an ancient 5,000-year-old cave painting because it seemed offensive. Here's the issue with most comedians in the world. Right, so we have something like this. We have something like this. Right, and I think we have something like this, and we have something like this. Not even Puneet Pania, bro. He's Indian George Carlin. I don't know who that is. So here's the issue with most comedians. US ka 14 Nilesh. It has nothing to do with US or not. I don't like most of the US comedians. I don't like most of the British comedians. I don't like most of the Hindi comedians. Just it's. How do I get to this?
this is most of the comedians, guys. I don't know if you see that or not. There's another C, by the way. I don't know if you see that or not, but this is most of the comedians. ये वाले comedians हैं, they care more about being smart than anything else. I think Veer Das comes in that category. और बाहर के चाहिए तो I think Bill Maher comes in that category. Right? Do you like yourself? Do I like myself? I'll have to think about it. Veer Das is in this category. He cares about more being smart than being funny. Bill Maher comes in that category. Right? जितने भी comedians होते हैं ना, जो intellectual comedy कर रहे हैं, so they are more concerned about being smart. Then there are people who are more concerned about being cool guys, right? I like Akash Singh. Has anyone seen him? He's very quick-witted and spontaneous. All right. Anthony Jeselnik. He's okay. He's all right. You can put him in this category, Anthony Jeselnik को, in the cool guy category. I would say जो उसकी जो comedy है, it doesn't, उसकी जो coolness है doesn't come at a cost of his comedy. Anthony Jeselnik. So एंथनी जेसनलिक में भी ये लेकिन फीचर डेफिनेटली है, बट उसकी कॉमेडी का पार्ट है जो कूल गाय पर्सोना. देयर आर अ लॉट ऑफ गाइज आई थिंक हु आर मोर कंसर्न्ड विद टू सीम कूल देन टू सीम फनी. देयर आर वेरी फ्यू गाइज इन द हिस्ट्री हु ओनली केयर अबाउट दिस वन थिंग, कॉमेडी, हु पुट देयर एंटायर लाइव्स इन दिस वन थिंग. संदीप भाई भी कॉमेडी ही करते हैं. एग्जैक्टली. सी, बट आई डोंट नो इफ यू गाइस सी दिस और नॉट. I think I don't know any comedian India में who's not concerned about being smart and cool, who's only concerned about being funny. I have not being funny, who's only concerned about the comedy. Love you, bhai. Naman Garg, thank you मेरे भाई. इतना प्यार, रोना आ जाएगा यार. इतना भी प्यार मत करा करो. तीसरी कैटेगरी क्या थी मैं भूल गया. So still बिंद्रा वो भाई साहब मुकुल तो आज पूरे चैट के लिमिट्स टेस्ट कर रहा है कि कितना चैट आएगी, कितनी यूट्यूब ब्लॉक करेगा. So does this make sense to you guys? Does this make sense when I'm talking about comedy like this? Does it make sense? Can you put more guys in these boxes, in these circles? Bro, stop. Jimmy Carr fits in this category, in the cool guy category. Actually, Jimmy Carr is right in the middle. Look how smart and cool I am. That's the Jimmy Carr persona. Right? And Jimmy Carr भी इंडिया में ही है ना शायद? How many guys can you honestly say which are in this category, India mein comedians, who only care about being funny, who are not concerned about being cool, who are not concerned about being smart? How many people जो Indian comedians say, you can tell me? Like I legit want to know. I think Harsh Gujral is one of those who cares about being cool more than anything. मैंने सिर्फ एक शायद सेट देखा होगा. I think Harsh Gujral is someone who fits in this circle perfectly. Bassi as well. इंडिया का ये इंडिया का ये सर्कल में तो मुझे वीर दास दिखता है. I don't know who else. Samay Raina maybe, I don't know. Samay Raina is closer, yes. I think Samay Raina is closer. But I think Samay Raina is also in the cool category, more than in this category. I would say so. Harsh Gujral is completely in this cool guy category, without a doubt. He's completely in this category. His persona is much more important. For him to seem cool, it's much more important. You can clearly see that in his sets. Gaurav तो मुझे नहीं पता कौन है. अब जो पुराने कॉमेडियंस थे, राइट, हु आर एग्जैक्टली स्टैंड अप कॉमेडियंस, जैसे कौन थे ये लोग सारे, जैसे राजू श्रीवास्तव हो गए, सारे जो लोग थे. नाउ दे वर एक्टर्स बट दे वर concerned about comedy, but they were actors, they were not exactly stand-up comedians, right? गौरव का पूरा नाम बताओ ना.
Rahul Gandhi doesn't even try to be cool and still makes us laugh. Gaurav Kapoor, I have heard the name Gaurav Kapoor. Let me see who Gaurav Kapoor is. हाँ मैंने देखा नहीं, so I cannot say. Maybe. बाकी वो तो मैं बता रहा हूँ ना, मुझे ऐसे लाइव पे लोगों के वो देखने में पसंद नहीं. Comedy sets, because yeah, they work really hard on them, and you should give them views. जाकिर खान also is a persona character. मैं जाकिर खान को पता है डालने वाला था, मैं जाकिर खान को इधर डालने वाला था, but I don't think so. I don't want to say it, but I think Zakir Khan is there. He wants to seem more smart. I think that's Zakir Khan. I could be completely wrong. I don't even want to say that, but I don't know why. मेरा मन मुझे ये कह रहा है. I swear I have never laughed like even on Zakir Khan's jokes. I don't like Harsh Gujral, Gaurav Kapoor and Harsh Gupta. Baki are okay, I guess, but I think Sumit Anand might fit your description. Sumit Anand. No Ball देखना. No Ball. Okay. पहले तो सुमित आनंद देखूँ कौन है. हाँ, I have never. मैंने ये थोड़ा सा देख रखा है शायद, but I have never seen Sumit Anand. I cannot say. I have never seen this guy. I liked him. I liked. Fuck. यार जिसने वो मूवी लिखी है, वरुण ग्रोवर, right? Yeah, I liked his वो पद्मावत वाला सेट. तुमने देखा है वो तोते वाला सेट? I liked that. नीलेश, you have पता नहीं, बहुत कम देखा है. ये किस क्या रहा है? न्यूयॉर्क official selection in focus shots, Mumbai film festivals, New York Indian Film Festival. He's coming out with a short film. That's nice. What do you think about Kapil Sharma? Is he about personality or sincere comedy? उनको यार सेम कैटेगरी में डाल ही नहीं सकते, पता है कि ये कपिल शर्मा वगैरह जो ये सारे कैरेक्टर्स थे ना, द ओल्ड स्कूल कॉमेडी ऑफ इंडिया, अपनी अरे ये क्या बात हुई? जो कपिल शर्मा और ये जो सारे ओल्ड स्कूल कॉमेडियंस हैं ना, उनको इन कैटेगरीज में डाल नहीं सकते बिकॉज दे आर नॉट दैट पर्सनैलिटी बेस्ड एनीवेज. I know, Mukul, what you're saying. I agree with that. लेकिन when I'm saying they're not personality based anyways, मतलब जब वो लोग एक्ट्स कर रहे होते हैं तो people don't think कि वो एक्चुअली उन लोगों को देख रहे हैं. People understand कि they are creating a persona. जो modern comedy है उसमें it is difficult to say that. बंकुश writes the joke. बंकुश कौन है? अरे यार मुझे वरुण ग्रोवर का ट्रेलर देखने दो, शॉर्ट फिल्म का. तुम भी देखो. He's a good writer, right? This place can sense your feelings. यहाँ टाइम उसी स्पीड से चलता है जिस इंटेंसिटी से आप उसे महसूस करते हैं. हमने बचपन में जो फीलिंग्स दबाई हैं, शर्म, गुस्सा, डर, अकेलापन, वो सब यहाँ निकलता है. I love this music. I love this music. Nice. कहाँ पर आ रही है? Written and directed by Varun Grover. Nice. Seems very nice. It seems really nice. 17 minutes sci-fi drama. एक बात कहता हूँ, एक बात कहूँगा. विपुल गोयल, आई एम रीडिंग यू गाइस. जैसे अभी ये वरुण ग्रोवर का शायद वॉइस ओवर था ना, ही एक्सप्लेन्ड कि ये ऐसी जगह है जहाँ ये सब निकलता है. नाउ ऑल ऑफ यू गाइस व्हेन यू वॉच दिस फिल्म यू विल एक्सेप्ट इट कि हाँ ये जगह ऐसी है कि हाँ, नोबडी वुड केयर कि इट्स नॉट लॉजिकल.
एंड दैट्स व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि जब लोग कहते हैं ना कि और लॉजिक तो ढूंढो, फिल्म्स में पीपल डोंट केयर अबाउट लॉजिक, पीपल केयर अबाउट द लॉजिक ऑफ द रूल्स ऑफ द वर्ल्ड दे हैव सेट इन द फिल्म. गंदी चीज़. अरे ये कपिल शर्मा की कॉल रिकॉर्डिंग से है. अच्छा. अभी पढ़ा मैंने. हाँ, ये वो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी थी बचपन में. हाँ, किसके? विपुल गोयल. लेट्स सी. नहीं, नेवर सीन. कॉमेडी इवॉल्व होगी इंडिया की. विल गेट legit artists in comedy as well. Right now I don't think we don't have an Andy Kaufman. तुम लोगों को नहीं पता ना Andy Kaufman कौन है? You guys don't know. You guys don't fucking know, do you? You don't fucking know who Andy Kaufman. Oh, you might have seen the Jim Carrey movie Man on the Moon. You might have seen that movie Man on the Moon. I don't know why you guys get so much into the nationalism. जब किसी भी चीज़ की बात हो रही हो, चाहे मूवीज़ की बात हो रही हो, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो रही हो, चाहे किसी भी स्ट्रक्चर की बात हो रही हो, जो स्टैंड अप कॉमेडी जब बाहर चलती थी इतने टाइम से चलती आ रही है ना, इतना टाइम मिला उसको इवॉल्व होने में. इंडिया में अभी शुरू हुई है यार, 10-15 साल पहले अभी शुरू हुई है इंडिया में. इट इज़ गोइंग टू इवॉल्व. विल गेट सो मेनी गुड पीपल. सो कंपेयरिंग एनी इंडियन कॉमिक बाहर के दिग्गज कॉमिक से, it's very irresponsible. It's not fair at all. कोई भी सेट देखो विपुल गोयल का. यार मैं लाइफ पे कॉमिक सेट्स नहीं देखना पसंद करता लोगों के. It feels wrong to me. It feels wrong. It's like listening to someone's song. It feels very wrong. That's why. तो you need to understand, जो कॉमेडी है यहाँ पर अभी इंडिया में इवॉल्व नहीं हुई है. It will evolve, and you're gonna get to see a lot of videos like these. You're gonna get to see a lot of video essays coming up. अभी इंडिया में like we are gonna get to see all of these things now. We are getting to that time. And do you guys know about Andy Kaufman? रेसलिंग नहीं यार. दिस गाय, डू यू गाइस नो अबाउट एंडी कॉफ? इंडिया की वुमेन की स्टैंड अप कॉमेडी नहीं लगती. अगेन, इंडिया नीड्स टाइम. इंडिया इज गोना ग्रो अ लॉट इन स्टैंड अप कॉमेडी. इंडिया नीड्स टाइम. यू गाइस डोंट नो हु दिस गाय इज. एंड व्हेन आई टेल यू अ स्टोरी अबाउट दिस गाय, यू विल फाइंड के व्हाट द फक, ये कॉमेडी कहाँ से है. एंड मे बी यू आर राइट, मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग. लाइक दिस गाय वुड कम ऑन स्टेज रैंडमली. इसका एक हाउसफुल शो है, सारे लोग बैठे हुए हैं इसका शो देखने के लिए. हिल कम ऑन स्टेज, हिल ब्रिंग आउट अ बिग फैट बुक. He'll bring out a big fat book and say, I want to read a book tonight, guys. And he'll start, Fyodor Dostoevsky is one of the finest psychologists in the world. Literature, was born in Moscow, 1821. Introduced to, and he would continue to read the entire book जब तक सारे उठ के नहीं जाते. That's what this guy would do. How's that funny? No, it's not. Maybe it's not funny. Maybe it's not funny. Maybe he was mentally disabled. I don't know. But was he an artist? He probably was. I think so. Not a lot of comedians are. Norm Macdonald was an artist. Not a lot of comedians are. किसी ने तो बना रखा होगा इस पे भी ऐसे. You think Indian comics can crack dark jokes like on casteism? It is difficult. लेकिन I don't think you guys think dark comedy is difficult. Dark comedy is the easiest form of comedy. That's what I think. I could be wrong, but that's the easiest form of comedy. क्यों? क्योंकि अगर वो जोक की जो कंस्ट्रक्शन है ना वो इतनी अच्छी नहीं भी है तब भी you will get laughs. Why? Because it's dark and you're not supposed to say it. Right? But कितना वी आर अलाउड टू स्पीक. शशि धीमन, वुमन स्टैंड अप कॉमेडियन. देखी नहीं यार मैंने. हैव अ लुक. मे बी मैंने देखी हो. मैंने 2 लड़कियां देखी थी स्टैंड अप कॉमेडियन. मैंने लाइव शो देखा था. आई डिड नॉट लाइक एनीथिंग. मैं लेकिन लाइव शो में हंसता बहुत हूँ. हमेशा मैं बहुत हंसता हूँ लाइव शो में. तन्मय इज ओवर रेटेड. तन्मय इज नॉट इवन अ कॉमेडियन नाउ. Genuine women stand up can never come on, Mukul, that's not true.
Shashi Dhiman. Not seen her. Short देख सकता हूँ मैं, किसी भी comedian की short देख सकता हूँ if you guys want me to watch किसी की shorts. But they can not. Guys, chill. Let's just watch. I'm gonna introduce you guys to Andy Kaufman. There you go. Oh, bye, guy. Arre, chill. Bahiri, chill. Guys, what are you writing? Easy, chill. Alright, this was... First of all, gentlemen, thank you. Thank you very much for being here, Andy. Let's take care of your neck injury now. When was the match? April 5th, right? Mm-hmm. And it's now almost August. Do you still need that neck brace on there? Yes. Yeah. I do. Are you in a lot of pain? Well, I'm not in nearly as much pain as I was, and it's healing, but it's still enough to wear the brace. One of those kind of nagging, lingering injuries that... I don't know what you call it, but I just have to wear the brace. Now, जो लड़की, I watched a girl called Gurleen. She's very famous. I know. I think, right? It was 3 people, 2 boys and 1 girl, and they was carrying the biggest cannon in the world to Spain. No, when you watch this, you feel like, okay, maybe he's making that personality like Kapil Sharma, right? मतलब या फिर इस type के he's like that kind of a comedian. He's making the personality. But listen to the joke. And 1 girl. It was 3 people, 2 boys and 1 girl, and they was carrying the biggest cannon in the world to Spain. So they carried it over the mountains and under the valleys, and one day they get to the highest mountain in Spain. They are on the top. So the first boy point this cannon to this castle, and he turned to the second boy and say, "All right, hand me the cannonball." So the second boy he say, "I thought you had them." So wait, so listen. Wait until I give you the punch. You guys will... I don't think any one of you guys will get what I'm trying to get at because I cannot explain it as well. They both turn to the girl and she say, "Don't look at me." You know, because they forgot to bring the cannonball. They could not shoot. See, and he even tries to explain the joke and shit. They have the cannon, but they have no cannonball. Do you understand? When I see... Now, did you listen to the audience reaction? पता नहीं कितना ही तगड़ा joke है, and it was the most fuddu joke of all time, right? And that's the artist in him. He can get people to laugh at whatever he says. That's the comedian in him. Jerry here, I've never seen the man in person before. To me, you'd have to be nuts to want to get into the ring with this guy. He appears to be maybe twice your weight, and he's better looking. I'm just. What was? I'm just teasing there, you know. But what was your motivation for wanting to fight him? Well, I had so many matches with women, and I always won, and I started really believing that I was a good wrestler. Mm-hmm. So I don't know. I'd beaten women bigger than him. I really thought that I could beat him. It's nice to see you. Tell me about Taxi. Maybe just watch the movie Man on the Moon, Jim Carrey wali. Maybe you'll get it better watching that movie. And I don't know how much should I go on. And by the way, my favorite comedian is this guy, Norm Macdonald, of all time. Okay. By the way, this guy, Norm Macdonald, right? He died in 2021, 22? Yeah, 2020. Somewhere around that time. He died somewhere around that time. He died of cancer.
Nobody knew he had cancer. Dude, saw you suddenly after 7-8 years. You were one of my first or second subscribed channels, Nilesh V. Loved your magic tricks. That medical dukaan wale bhaiya. What happened to that channel? That channel, brother, got hacked and then deleted. But good to see you, man. How are you? I hope you're doing well. 7-8 saal baad. So, this fucking guy. So, he has those qualities, right? He only cares about being funny. He only cares about these things. The guy had cancer for like, his entire life. कुछ लोगों को लगा था कि शायद 10 साल से नहीं, but he basically had it for their entire lives. And he never told anyone about the cancer. Nobody knew, not even his closest friends. They didn't know. उसके बाद he had the thing. There was a good indication कि भाई अभी ये सर्जरी के लिए जाएगा तो he'll just die. That was basically the idea. And that's when he recorded his last special, because he couldn't go out and make specials लोगों के साथ क्योंकि COVID and everything, right? And this guy recorded his last fucking special the day before or ऐसा कुछ. He went in for the surgery. He said he wouldn't want to leave anything on the table. That is the guy who's completely dedicated to his art. Completely. He's recording the special on the webcam with the mic. Even in this special, he never says a word about cancer. Never. He does that. He's just concerned about, his craft. The only time it seems you ever survived. It is so difficult to record a stand-up like this. It is almost, it is next to impossible to record a stand-up like this and make those jokes land. By the way, you guys talk about Indian comedians. If you watch this, all of these guys gave a tribute to him. All of these guys. वो तो हो जाता है. तुम you start seeing patterns, you start seeing जब वो पॉजिटिव अच्छा premise आ गया, अच्छा सेटअप आ गया, तो it doesn't उतना मजा नहीं आता वो देखने में. But Norm is like so unique, so special, so different and so random कि मुझे पता नहीं कब क्या आ रहा है. And even मुझे याद है इस समय की स्ट्रीम में मैं देख रहा था, किसी का ना यहाँ पर कुछ हुआ आया था, किसी का कमेंट आया था, and it was like watch Anthony Jeselnik for dark jokes. He's not concerned about making dark jokes. Norm is not concerned about making dark jokes. No, not at all. I think we rewatched the stand-up videos of Abhishek Upmanyu and they rewatched stand-up of Norm. Clears it how great he was. Norm wasn't the most popular comedian. He got quite popular अपना शुरू में वो करते हुए when he was doing his Saturday Night Live वाला gig. Saturday Night Live, I don't know if you guys know about it or not. It's one of the longest running shows बाहर. ठीक है, तो he got a gig there. He would do these shows and everything. But anyways, that's my favorite comedian of all time. There's this channel, I'm Not Norm. You can watch their videos. Amazing videos. And according to me, the best comedian of all time. And I think ये ना अपना podcast करता था इस बंदे के साथ, ये Adam Egate के साथ. Before he died, Norm told this guy that he also didn't have any idea, I think. Norm told him, you are about to get a promotion or something like that. Any plan on to do daily vlogging again? Not daily vlogging, yaar. I'm gonna stream. I like streaming abhi though. I make videos every now and then. महीने में एक video. I like making videos. वैसे मैं short film वगैरह बनाता हूँ. That's like my goal for life. Okay, this is a good joke. I think I can get into this joke. Safer drivers, man. Watch this. Who are safer drivers? Safer drivers, men or women? Well, according to a new survey, 55% of adults feel that women are most responsible for minor fender benders, while 78% blame men for most fatal crashes. Please note that the percentage in these pie graphs do not add up to 100% because the math was done by a woman. For those of you hissing at that joke, it should be noted that that joke was written by a woman. So now you don't know what the hell to do. In Milwaukee. Oh. No, I'm just kidding. We don't hire women. Now, here's the thing. Let me explain just this little joke here. Right, he starts with this. Who are more dangerous drivers, men or women? Already तुम्हारे पास एक
माइंड में वो आ चुका है, प्रीटेंस आ गया कि दिस वाज गोना बी अ मिसोजिनी जोक, इट्स गोना बी अ सेक्सिस्ट जोक. ही मेक्स द एंटायर जोक. द होल जोक सेज कि women छोटे मोटे क्रैशेस ज़्यादा करती है और men fatal क्रैशेस ज़्यादा करते हैं. You're like, oh, this is just a statistic. It's not exactly a misogynistic joke. It's actually saying कि men ज़्यादा बुरे एक्सीडेंट करते हैं. Then he goes के then there's another punchline which is like, as you can see, these numbers don't add up to 100 because the math was done by a woman. So you're right in the first time assuming कि it's going to be a misogynistic joke, but not about the content of the joke. And then he goes, then they're like, oh, dude, that's funny, misogyny joke. And then he goes, and then he goes, what did he say? Woman. So the math was done by a woman. now you don't know what the hell to do. Now you don't know what the hell to do. Right? So now he's pointing out the hypocrisy. मैं एक step आगे चला गया. That joke was written by Because the math was done by a woman. हाँ. Then he goes, for all of you booing or hissing at that joke, it should be noted that joke was written by a woman. Now, people are obviously confused. Okay, what do you do now? You cannot call it misogynistic when it's written by a woman. A woman is benefiting from it. And so what does that say about you? Agar a woman makes a joke which is, misogynistic in its content, is it not misogyny? No. So that's your hypocrisy. Then you feel like, oh, okay, yeah, maybe I'm wrong. The joke was written by a woman. That's okay. Maybe he's not attacking women. A woman wrote that joke. For those of you hissing at that joke, it should be noted that that joke was written by a woman. So now you don't know what the hell to do. And you see, now hypocrites. Now you don't know what the hell to do. No, I'm just kidding. We don't hire women. I'm just kidding. We don't hire women. This guy was a fucking genius. A fucking genius. Now you don't know what the hell to do. So yeah, to me, the best comedian of all time. Out of everyone I've seen. ऐसा हाँ, इट्स प्रिज्यूम्ड कि इस टाइम पे भी इसको कैंसर था. एंड आई थिंक ये जो वीडियो है, इट्स सपोज टू शो कि ये देखो कैमरा देखते ही गेट्स ऑड अबाउट हिज कफिंग. You've been thinking about your mortality? Because he kept it hidden from everyone. And that's a different thing. We can do an entire fucking stream about Norm Macdonald. I love this guy. I watch this guy all the time. I watch this guy on repeat. Here's another interesting thing about this guy. Most of the times, if not all of the times, he would be the smartest guy in the room. But all of the time, you'll feel he's the dumbest guy in the room. Anyways, अमित सूर्यवंशी, चेस गाइज, आजकल स्ट्रीम ज्वाइन नहीं कर पा रहा हमारे आंदोलन के चलते. होप आज रात हमें आरक्षण मिल जाए. रस्तों पे सोना बहुत मुश्किल है. आई होप यू आर डूइंग वेल मैन. आई होप यू आर डूइंग वेल. I hope you get what you need. I hope you're doing well. I hope everything is fine over there. But anyway, so that was my rant about comedy, guys. It's very difficult to explain. You cannot explain comedy just Norm Macdonald, Andy Kaufman in लोगों में, right? You cannot explain that comedy. And there's this, do I want to do that? Do I want to do that or not? So there's this clip, तुमने सबने वो समय राणा की वो वाली clip देखी होगी. I'm sure all of you guys have seen समय राणा की एक clip, right? Wait, कौन सी है? ये वाली है ना? Yeah. Everyone has seen this clip. And I feel this is a setup. Obviously, I mean, this is very pre-planned, right? All of you have seen this clip, right? Watch this. It's exactly the same story, actually. कहाँ है वो बंदा जो बताता है? हाँ, this is the fucking story.
I was Norm's assistant at SNL. Were you really? Yeah, when he did Update. You got Alvin with the fucking governor. The governor. Bet the first period or something. I go. ऐसी चीज के चक्कर में बेसिकली नॉर्म मैकडोनाल्ड गॉट बैंड बाय अ स्टेट्स गवर्नर कि ये इस स्टेट में नहीं घुसेगा हरामखोर. Okay. Too bad that game was 6 days ago. Comedy history. I think he was kicked. He was kicked out of Nebraska. That sounds realistic. And you can maybe look it up later. Where it says Norm Macdonald was kicked out of the state by the governor, and he went on Letterman to talk about it. And I want to say it was like 1996 because I just finished my first year at SNL. It was 95, so it was the summer of 96. And I remember going on tour. There you go. You saw it. Good. Should we look on a video out of Iowa? Yes. Okay. All right. So many were disgusted. Some were delighted. So he's supposed. Now you understand something, okay? Mm-hmm. This is the first time me touring with a star. Okay. We go to the airport and people are like, oh my God, you're Norm Macdonald. I'm like, wow, this is everywhere we went. Oh my God, you're Norm Macdonald. We show up at the university. He's like, I gotta go golfing with the fucking governor tomorrow. They want me to fucking golf. Fucking governor. Yeah, what is that game where you fucking hit the right? thing? So I'm like, he's with a governor. This is huge. Who gets to say that? So it's me, Daryl Hammond, and him. And you both of you guys went? We're on the sorry. gig. Okay. We're going out. He's telling us. Daryl Hammond, yes. And so we get to the gig, and is packed. And they go, now listen, there's kids here, and there's students and alum and the dean, and all those people here. So that's the worst. they're like, yeah, clean. I get it. No worries. I go, we're in Sunny Lake. He goes, that's why we got you guys, because you're used to live TV. Blah, blah. So Daryl goes up first, does his 20 minutes, does impressions, does his comedy. Hilarious. Mm-hmm. I go up, do my 20, feel great, crush it. Norm goes up. I'm not even exaggerating. The first thing he says, he goes up, he goes, I'm preparing. I'm like, this is going to launch my career. Are you kidding me? This is going to be huge. I'm going to be all. He goes, fucking, man, the fuck out of me? First person to even curse. Right? I went, oh, shit, he cursed. And he goes, so if you're gay, would you rather be the ass guy or the dick guy? This is what he starts off with. So I go, Daryl, you gotta come see this. And he's going, and he won't stop. He's like, Daryl's just being depressed in the back. Because if you're the ass guy, why do you want to be the ass guy? First of all, he's going on. People are grabbing their kids, running up the aisle. I never saw a place clear out. It looked like a fire alarm was going off. But the college students were staying, and they were howling with laughter. And one thing, and then in the middle, after about 15 minutes, he goes, Jesus Christ, what do you want to do? You want fucking airplane jokes? You want fucking 7-Eleven jokes? Like, Jesus Christ, fuck out of here. So the next day, in the paper, USA Today or the Gazette, they're like, Norm Macdonald's out. Wow. Governor wants him out of the state. Governor wants him. Bro, get out of my state. That was Norm Macdonald, guys. There's another story about this guy. तो ये जाएगा स्टेज पे, राइट, कॉमेडी स्टोर्स वगैरह में, छोटे मोटे किसी स्टोर्स में, एंड ही वुड परफॉर्म हिज सेट. समटाइम्स ही विल डू गुड, समटाइम्स ही विल डू हॉरिबली. जब वो अच्छा करता था, लोग, पीपल लव हिम. He would just go back in there and, get on with his life, do whatever he was doing anyways. But when some people believe that, मतलब उसने कभी नहीं बोला, but a lot of people believe that, कि जानबूझ के he would bomb a lot. He would come to the stage and bore people and, make bad jokes, and जिसमें लोग नहीं हंसेंगे. He would bomb a lot. And when he would bomb that much, when he was successful in his set, जब सारे हंस रहे हैं पागलों की तरह, वो पीछे बैक स्टेज जाके will get on with his life. But when he would bomb the entire set, पूरा घटिया जा रहा है, then जब सारे जा रहे होंगे, he would be standing on the door, meeting everyone as people are leaving. Just, hey, I hope you enjoyed the show. I hope you enjoyed the show. So yeah, I consider Norm Macdonald to be another artist in comedy. I know of these two people who I consider to be artists in comedy.
Andy Kaufman, Norm MacDonald. I think Louis C.K. is very close. I think Louis C.K. is extremely close to being that. Maybe Dave Chappelle as well. But yeah. So, anyways. Let me change the thumbnail or ये सारी चीज़ें stream की यार, because I don't wanna do all this clickbait shit. Research है तो घंटा आज कुछ research करने के बारे में है ही नहीं. लोगों ने पहले ही इतनी चीज़ें डाल दी. I thought there would be a lot of things to research about. And there's not enough. Maybe there is, and I'm not doing that much. Where the fuck is my chill stream thumbnail? There it is. So yeah, that's why I don't like most of the comedies. Now you guys get it? You probably don't. I understand that. That's fine. It's not for most people. Just like art galleries are not for most people. Art galleries are not for me. I'm not a big fan. Hi. I'm gonna play some games and then I'm gonna leave. If there's something you guys are interested in, let me know. ठंडक सी हो रही है यार. Wait, what the fuck? Wait, what the fuck am I doing? Chat is working now. अब काम कर रही है. कभी करती है, कभी नहीं करती. All right. Alright guys, anyways, I'm gonna end it right now. मुझे पूरा setup करना पड़ेगा फिर से. Thanks a lot for joining in. I'll see you tomorrow. Goodbye.